So as we are done with the gynoecium, and we have spoken about the placentation and all those things. Now let us continue with the fruit and the seed first, right? So now how do you define a fruit? A fruit is a ripened ovary. What do you mean by a ripened ovary? That the ovary results in the formation of the fruit, and that occurs mostly after a process called double fertilization. After double fertilization, it is the ovary that results in the formation of the fruit, and the ovule results in the formation of the seed. So that is why we say that the fruit is a ripened ovary. In some cases, the fruit can develop without fertilization. So the ovary directly develops into a fruit because of some hormonal stimuli. There is no seed formation in such a fruit. So such a fruit is called parthenocarpic fruit. So parthenocarpic fruits are the seedless fruits. The fruits can be classified into three simple types: a simple fruit, an aggregate fruit, and a composite fruit. What is a simple fruit? The simple fruit develops from one flower, which has a monocarpellary gynoecium. Monocarpellary, मतलब only one carpel. Or else, if it is multicarpellary, it is going to be syncarpous. मतलब ये जो फ्रूट फॉर्म होगा सिंपल फ्रूट, उसका जो फ्लावर था उसके अंदर या तो एक ही कार्पेल था या बहुत सारे कार्पेल्स थे, but all the carpels got fused. So that condition is called as a syncarpous condition. Now, if the fruit is having a fleshy pericarp, then it is called as a fleshy fruit, or else it is called as a dry fruit. So in a typical fruit, you have a seed, and the fruit wall has three layers: epicarp, the middle one, mesocarp, and the innermost one, that is the endocarp. Together it is called as the pericarp. So if the pericarp is fleshy, then the fruit is called as a fleshy fruit, which can be classified as a drupe or a pepo, berry, and a pome. And there is no need for us to go into the details of these fruits. The second type of fruit is an aggregate. Aggregate मतलब group, जहां पे it is a polycarpillary apocarpous gynoecium. मतलब एक फ्रूट है, वो फ्रूट एक ही फ्लावर से आया है, लेकिन वो जो फ्लावर था उसके अंदर बहुत सारे कार्पेल्स थे, और ये जितने भी कार्पेल्स थे ये एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं थे, फ्री थे. सो दैट इज व्हाट इज अ पॉलीकार्पिलरी अपोकार्पस gynoecium, जहां पे every ovary developed into a fruitlet and many fruitlets came together, resulting in the formation of an aggregate fruit. इसके एग्जाम्पल में you have strawberry, also you have stirred apple. These come under the examples of aggregate fruit. अब उसमें इटारियो ऑफ अशीन्स होता है, इटारियोस ऑफ बेरीज होता है, ऐसा अलग अलग इटारियोस होता है. Now, in a composite fruit, one fruit develops from an entire inflorescence. That is why it is called as a composite fruit. Okay? जैसे कि एक फ्रूट है, एक फ्लावर में से नहीं आया,
पूरे फ्लावर के गुच्छे में से आया. So when we eat a jackfruit, okay, there was an inflorescence which converted into entire jackfruit with a green covering called rind. एंड सेंटर में जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं पेडंकल, वो जो फ्लोरल एक्सिस था. और जो छोटे छोटे फ्रूटलेट हम लोग खाते हैं जैक फ्रूट के, वो एक पूरा फ्लावर ऐसे. एंड वी हैव types in that, like the Syconus. Okay, and the Syconus develops from a type of inflorescence called as the Hypanthodium inflorescence. And its examples include fig, peepal, banyan. That is the ficus species. The second type is that which develops from a type of inflorescence called spike or catkin or spadix inflorescence. And its examples include mulberry, pineapple, jackfruit. Okay. Now, the NTS curriculum does not expect us to go into the details of these fruits. What is a uh, poem or the details of the catkin and the spadix inflorescence. So my suggestion to the students would be that you're supposed to remember this as a factual data. Botanically, it can be explained, but the need is not there. So as I already told you, that simple fruit can either be a fleshy fruit or it can be a dry fruit. फ्लैशी फ्रूट वो होता है जिसकी पेरिकाप फ्लैशी होती है, और उसके पेरिकाप को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एपिकाप, मीजोकाप और एंडोकाप. ड्राई फ्रूट में पेरिकाप ये होता है, फ्लैशी नहीं होता. ओके, और उसके तीन डिविजन से नहीं कर सकते ऐसे. तो फ्लैशी फ्रूट्स में there is a type which is called as a drupe fruit. Okay, and drupe के पास the endocarp is going to be stony. Okay, and it develops from a monocarpillary superior ovary. इसके एग्जांपल्स में आता है मैंगो, कोकोनट, आलमंड, walnut. Mango and coconut में, in mango the mesocarp is fleshy and edible, whereas in coconut the mesocarp is fibrous. Berries are those fruits which develop from axile placentation. If they develop from superior ovary, it's a true berry. Inferior ovary is a false berry. Just remember the examples: tomato, brinjal, true berries; guava, banana, false berries. Okay. Pepo type of fruit comes from the family Cucurbitaceae. Then the dry fruits can be classified further as our dehiscent and indehiscent fruits. Okay, students, अगर एक fruit wall rupture होती है and then it releases the seeds, then it is called dehiscent. अगर fruit wall rupture नहीं होती, then such a fruit is called as an indehiscent fruit. So Cypsella, Caryopsis, which belongs to the Gramine family, are examples of indehiscent fruit. जैसे जवार, राइस, ये टूटते नहीं है. डेहिसेंट फ्रूट वो होता है जो रप्चर होते हैं, सीड्स को रिलीज करते हैं. इसमें एक टाइप होता है लेग्यूम्स, या उसको पॉड बोलते हैं, पी पॉड, मार्जिनल प्लेसेंटेशन वाले. देन यू हैव गॉट कैप्सूल्स, ओके, जिसमें लेडी फिंगर आता है, एंड डिफरेंट टाइप्स लाइक सिलिक्वा एंड सिलिकुला. Now, as we have already discussed about, the fruits that are formed without fertilization are called as parthenocarpic fruits. An example would be banana. हम लोग हॉर्टिकल्चर में ऑक्सीन्स, जिबलिन जैसे हार्मोन्स यूज करके काफी सारे फ्रूट्स को हम लोग पार्थेनोकार्पिक कर देते हैं. जैसे थॉमसन सीडलेस ग्रेप्स इज एन एग्जांपल ऑफ अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. इसमें कॉमन एक एमसीक्यू ऐसा आता है कि which of the fruit will lose its commercial value if it is made parthenocarpic, या फिर which of the following fruit cannot be made parthenocarpic. अब as I have already told you, parthenocarpic fruits are those fruits which are seedless. तो एक बेसिक रूल ध्यान ध्यान रखिए कि जो भी
फ्रूट्स के हम सीड्स कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, उनको हम लोग पार्थेनोकार्पिक नहीं कर सकते। जैसे पोमेग्रेनेट हो गया, आलमंड हो गया, या कोई भी नट्स हो गए, आप उसकी सीड ही खाते हो तो उसको सीडलेस करके क्या ही मतलब, ऐसे। तो वो एक लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग एनटीए यूज करता है ना। अगर ओवरी पार्टिसिपेट करता है, सिर्फ और सिर्फ ओवरी पार्टिसिपेट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट, दैट इट इज कॉल्ड द ट्रू फ्रूट, यू कार्प। ओवरी के अलावा भी अगर कोई पार्ट्स यूज होते हैं फ्रूट फॉर्मेशन में, तो उसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं, सूडो कार्प। जिसे एप्पल में जो पार्ट हम कंज्यूम करते हैं चबा के, वो थैलामस है, तो वो क्या हो गया, फॉल्स फ्रूट हो गया, बिकॉज थैलामस इज पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट। अगर हम लोग एक ब्रिंजल देखेंगे तो उसके सेपल्स भी फ्रूट के साथ अटैच्ड है, तो वो भी क्या हो गया, एक फॉल्स फ्रूट हो गया। सो रिमेंबर, whenever only ovary participates in the formation of the fruit, then such a fruit is called as a true fruit. If parts other than ovary also participate, then such a fruit is called as a false fruit. Now, when we talk about the seed is ovule after fertilization. तो एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ओव्यूल का दिखाया, जहाँ पे ओव्यूल has an opening at the top, which is called micropyle. It has got two protective coats, that is outer integument and the inner integument. Inside, it shows the presence of a tissue called nucellus. Nucellus करके एक tissue होता है. Then there is an embryo sac which contains the polar nuclei, egg, etc. The stalk of the ovule is called as the funicle, and the point of attachment of the funicle to the body of the ovule is called hilum of the ovule. अब यही सारी चीजें हमको सीड में दिखती है, जैसे कि आउटर इंटेगुमेंट will form the outer seed coat, inner integument will form the inner seed, together it is called the seed coat. Outer seed coat is called testa. Testa develops from the outer integument. Inner seed coat is called tegument, it develops from the inner integument. So integuments, outer and inner, change into the testa and the tegument respectively, forming the seed coat. जैसे ओव्यूल के पास माइक्रोपाइल था, सीड के पास भी माइक्रोपाइल होता है, एंड in the case of an ovule, this micropyle helps in the entry of the pollen tube, and in the seed it helps in the entry of water and oxygen and the exit of the radicle. यहाँ से रूट सिस्टम का radical exit ले सकता है. जैसे ओव्यूल के पास हाइलम था, काफी बार वो हाइलम एक स्कार के फॉर्म में, एक मार्क के फॉर्म में दिखाई देता है, क्योंकि many a times the funicle, that is stalk of the ovule, may degenerate, and what you see is the presence of a mark of a attachment of the stalk to the seed in the form of the scar of the hilum. मतलब जब वो ओव्यूल था तब उसके पास हाइलम था, सीड के केस में वो हाइलम एक स्कार की तरह दिखाई देता है. कुछ कुछ सीड्स ऐसी होती हैं जहां पे जो न्यूक्लियस है मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो डिजेनरेट हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ ओव्यूल्स में ये न्यूक्लियस डीजनरेट नहीं होता, तो सीड में भी पाया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ persistent nucellus, रह गया हुआ न्यूक्लियस, which is called as the perisperm. It is seen in black pepper, beet, castor, etc. Now, okay, so these are the things that you need to remember. Seed, depending upon the number of cotyledons, can be classified as a dicot seed and a monocot seed. जो dicot seeds होते हैं, they show the presence of two cotyledons, and monocot seeds show the presence of a single cotyledon. So dicot show the presence of two cotyledons. See here, this is an embryo axis. It's an embryo axis, which is called as stygellum or the embryo axis.
ये दो कॉटलीडॉन्स हैं, लाइक इन द केस ऑफ चना, सेंगदाना, जहां पे the दो cotyledons can be open like the two pages of a book. The point of attachment of the cotyledons is called the cotyledonary node. The region above it is called epicotyle. The region below it is called the hypocotyle. The hypocotyle का tip is called radicle. Epicotyle का tip is called plumule. Plumule develops into the shoot system. Radicle develops into the root system. डाइकॉट सीरीज में मोस्टली, ऑलवेज नहीं, ये कॉटलीडॉन्स जो होते हैं वो फ्लैशी होते हैं और इसमें रिजर्व फूड होता है। वही जब हम देखते हैं एक मोनोकॉट एम्ब्रियो को, ओके, सो इन द केस ऑफ अ मोनोकॉट एम्ब्रियो इट शोज द प्रेजेंस ऑफ अ single cotyledon. Okay, it's a simple cotyledon which is shield shaped. Such a shield shaped cotyledon is called as a scutellum. Okay, and it also has the embryonal axis. देखिए ये वाला, it also has an embryonal axis. और देखिए एक सिंपल कॉटलीडॉन है यहाँ पे, लेकिन जो दूसरा वाला था वो देखो हाईली क्या हो गया, रिड्यूस कॉटलीडॉन हो गया, जिसको हम कहते हैं एपीब्लास्ट। ओके, तो ये है आपका कॉटलीडॉन जो अटैच है एम्ब्रियो एक्सिस पे। रीजन अबव एपी हो गया, बिलो हाइपो हो गया। एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो ऊपर वाला टिप है दैट इज द प्लिम्यूल, एंड हाइपोकोटाइल का टिप इज द रेडिकल। द रेडिकल will develop into the root system, and the radicle is covered by a root cap which is protected by an undifferentiated sheath which is called coleorhiza. And here the plumule is protected by a hollow leaf-like foliar structure which is called as the coleoptile. So plumule is covered by the leaf primordium, and it is protected by a coleoptile, a hollow foliar structure which is called as the coleoptile. See over here, this is the coleoptile. So you have a coleorhiza protecting the radical, coleoptile over the plumule, in short. So this is about a monocotyledonous embryo, which shows the presence of a single cotyledon. It is shield shaped, so it is called as a scutellum. The other cotyledon is highly reduced, it's called the epiblast. You have an embryonal axis with an epicotyle and a hypocotyle. The tip of the hypocotyle is the radicle. The tip of the epicotyle is the plumule. The plumule is covered by the leaf primordium, which is in turn covered by a hollow leaf-like structure, which is called coleoptile. The radicle has the root cap covered by the coleorhiza. So if you take an example of the maize का fruit and the seed, तो यहाँ पे ध्यान में रखिए कि ये जो फैमिली है पोएसी, जिसको हम ग्रामिनी फैमिली भी कहते हैं, यहाँ पे सीड कोट एंड फ्रूट वॉल फ्यूज हो जाते हैं। मतलब द पेरिकार्प एंड द सीड कोट गेट फ्यूज, and this fusion of the seed coat and the fruit wall is called as the hull. Okay, now you see the presence of an endosperm, and the endosperm is surrounded by the aileron layer. Okay, and this aileron layer can release enzymes which can help at the time of seed germination. जिसे एल्यूरोन लेयर कुछ अल्फा अमाइलेज नाम के एंजाइम्स रिलीज करता है, जिससे एंडोस्पर्म की जो स्टार्च है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है शुगर्स के अंदर। ओके, एंड एल्यूरोन लेयर एंड एंडोस्पर्म दोनों को क्वेश्चंस में ट्रिप्लॉइड कंसीडर करना है। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिए बच्चों लोग, एंडोस्पर्म एंड एल्यूरोन लेयर दोनों को एमसीक्यूज में ट्रिप्लॉइड कंसीडर करना है। सो नाउ वी हैव द scutellum, the coleoptile, the plumule, radicle, and the coleorhiza. Now, as we have seen in our previous discussion, that the seeds show the presence of an endosperm. But many a times the cotyledon consumes the endosperm, खा लेता है उसको, as a result of which
फाइनल सीड में आपको कॉटिलीडॉन, फाइनल सीड में आपको एंडोस्पर्म नहीं दिखाई देगा। तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो एम्ब्रियो ने एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लिया, जिसकी वजह से कॉटिलीडॉन्स हैव बिकम फ्लैशी, एंडोस्पर्म हैज बिकम पेपरी, एकदम स्केली। सो ऐसे सीड्स को हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। एंडोस्पर्म को एल्ब्यूमिन भी बोलते हैं, इसलिए ऐसे सीड्स को हम कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स, और ये मोस्टली डाइकॉट्स में पाए जाते हैं। ऑर्किड एक मोनोकॉट है, उसके अंदर भी आपको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स दिखाई देंगे। डाइकॉट्स के एग्जाम्पल में आपको याद रखने हैं पी, बीन, मस्टर्ड, sunflower, groundnut. These are examples of the non-endospermic seeds. Whereas endospermic seeds are also called as albuminous seeds. They're mostly found in monocots like grasses, coconut, sugarcane, wheat, and maize. Some dicots, like castor, show the presence of the albuminous or the endospermic seeds.